ओके, तो आज हम देखने वाले हैं एंटी अल्सर एजेंट्स मींस दीज आर द दोज ड्रग्स दैट आर यूज्ड टू ट्रीट the ulcer. What is ulcer? I will also explain in next slide, but you can understand what are the anti-ulcer agent. These are those drugs and agents that are used to prevent and repair the stomach valve inside the stomach. Means there is a lining type of and a hard stomach layer that is present inside the layer. ठीक है, that control your acid overflow and over secretion. ठीक है, if the layer will not be present, then your other layer of stomach will be burned by the hype of HCl, and that you know well the pH level of the HCl is very concentrated. So for protection of this pH, there is a protective layer that present in our stomach bath. So let us discuss what are the anti-ulcer agents. So these are those agents or drugs that are used in treatment of ulcer. Means ये वही हैं जो अल्सर को ठीक करने के लिए यूज होते हैं. ठीक है, these drugs are given to repair the lining of stomach valve that tolerates the pH of stomach. So these drugs mainly help in the repairing of the stomach valve. आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये ड्रग्स वो होती हैं जो स्टमक वाल टूट जाती है, मीन्स रप्चर हो जाती है एसिड के ज़्यादा फ्लो की वजह से. मीन्स द स्टमक वॉल गेट द रप्चर ड्यू द ओवरफ्लो ऑफ HCl in our stomach. So these drugs just repair that that ruptured wall in the stomach. When the rupture wall get repaired, then there will be no acid reflux in the stomach and your condition will be normalized. Okay, देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर. थैंक यू. Hi and hello, my name is Aryan Singh. I am pharmacy graduate. Okay, today we will discuss about peptic ulcer. It is a common disease that is found in many peoples or many old age and young age also due to their poor diet and poor health. Means they are using more spices and that spice cause many problems and this problem is one of them that problem. Okay, let us discuss what is peptic ulcer. So you know that in our stomach there are a single layer that protect our over secretion of HCl from outflux. That is known as the protective layer of the stomach. So let us discuss what is peptic ulcer. Peptic ulcer are those that develop inside the lining of esophagus, stomach, upper portion of small intestine and duodenum. Means these are the small pores in the protective layer of the stomach. These are the small pores in the protective layer of the stomach that cause the acid influx and gastric problem etc. and that cause also pain and acid burning etc. So these may can be originate in the duodenum, stomach and upper position of small intestine that is called as duodenum. Means starting position of small intestine that is called as duodenum, and it may also cause in esophagus. Esophagus is the beginning point of your stomach, and in it may also cause in your center stomach. Means these are the small pores in the your protective layer of the acid influx. So these are the bursting. You may also call it is a bursting of your protective layer of the stomach. It is called as peptic ulcer. Okay, next देखते हैं types of peptic ulcer. There are three types of peptic ulcer. I already told in first session, but you may also consider here gastric ulcer, duodenal ulcer, and esophagus ulcer. I already told you esophagus is the beginning part of your stomach. Means esophagus is the food pipe of your digestive system. So in duodenal, your duodenal initial part of your duodenum get infected or may pour or spores by the acid overflow or over secretion. So the spores get created in your protective layer of your stomach. So that cause your duodenal ulcer and esophagus. I have explained and gastric ulcer. These are the main and central ulcer in your stomach. Okay, when acid get overflow, so it cause a spore or a pore in your protective layer of your stomach wall that cause acid influx, many pain. ठीक है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, एसिडिटी etc. ओके नेक्स्ट देखते हैं
Causes of peptic ulcer. Actually, why peptic ulcer cause in our stomach and what is the problem behind it? Okay, let us understand what is the main cause of peptic ulcer that it creates. So it is due to an imbalance in between the aggressive and defensive factors. There are two types of factor in our stomach system. One is aggressive factor and second is defensive factor. So when aggressive factor acid when acid will increase, then gastric mucosa. Mucosa is a liquid part that secreted in our stomach. It will protect acid by gastric mucosa. So next is pepsin. Pepsin is also protected by the defensive factor. When pepsin will increase, then defensive factor will activate and it release bicarbonate secretion, and the bicarbonate secretion will protect pepsin, so as well as bile acid, prostaglandin and gastrin, nitric oxide and helicobacter pylori, high mucosal blood flow. Okay, so when the aggressive factor will increase, then defensive factor will activate, and if this factor get decrease that active flow. Okay, so when aggressive factor will increase, then defensive factor will also get high in your in this initial level, so that will equalize that. Okay, so it is a main problem behind the peptic ulcer, why peptic ulcer occurs. So when you may see that when acid will increase, so gastric mucus will protect that. If the gastric mucus, if the acid will increase more than the gastric mucus release, then it will cause peptic ulcer. Means when aggressive factor will increase more than a log factor, then the defensive factor will get decrease and it will cause your peptic ulcer in your protective layer of the stomach. Okay, I think you will be understand what is the reason behind peptic ulcer. Okay, next, classification. I have already explained in detail by handwritten video what is a classification of anti-ulcer drugs. Anti-ulcer drugs have a broad classification. So I have already explained the mainly and the personalized drug that are used in peptic ulcer. So once again I repeat what are the drugs that are used in peptic ulcer. These drugs are the mainly protect and cover the lining of gastric protective layer. Okay, let us see the classification. Gastric acid secretion inhibitor means these are the inhibitor and suppressor of the gastric secretion, means they get inhibit the secretion of gastric acid, means HCl. HCl are the how the HCl form in our stomach. HCl when bicarbonate and H plus ion get fused with together, then it form a HCl in the presence of HAP, HAPase and calcium ATPase pump. Okay, so let us see H2 and antihistamines. H2 is receptor, H means these drugs get attached and show their pharmacological action. So these are cimetidine, ranitidine, famotidine, oxetidine, and lufetidine. Okay, proton pump inhibitor means they are a gastric acid neutralizer. Okay, so let us see omeprazole, esomeprazole, pantoprazole, lansoprazole, ruprazole, और डेक्सोप्राजोल एंड इलेवोप्राजोल. ओके, प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग मिसोप्रोस्टल. ठीक है, अगला है तुम्हारा एंटीकोलिनर्जिक. एंटीकोलिनर्जिक एक्टर जो होते हैं वो तुम्हारे एम रिसेप्टर पे अटैच होते हैं. एम रिसेप्टर पे अटैच होंगे वो अपना फार्माकोलॉजिकल एक्शन दिखाएंगे, और इसमें कौन से होते हैं? प्रेंजेपाइन, ठीक है, प्रोपेंथिलाइन और ऑक्सीफ्लोनियम. नेक्स्ट देखते हैं गैस्ट्रिक गैस्ट्रिक एसिड न्यूट्रलाइजर्स. एंटी एसिड मतलब ये एंटी एसिड मतलब जो साल्ट बनता है उसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं. इसमें तुम्हारे सोडियम बाइकार्बोनेट होता है और सोडियम सिट्रेट होता है, ये तुम्हारे सिस्टमिक होते हैं. और नॉन सिस्टमिक तुम्हारे को होते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट, ठीक है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नेट एंड कैल्शियम बाइकार्बोनेट. ठीक है, और तुम्हारी एक क्लास और होती है अल्सर प्रोटेक्टिव्स. इसमें तुम्हारा सुपरफेट होता है और कोलाइड बिस्मथ सबस्ट्रेट मतलब सीबीएस, ये तुम्हारा अलग से दिया जाता है. ठीक है, अल्सर को प्रोटेक्ट करने के लिए. एक ये हार्ड मतलब सस्पेंशन जो होता है ना, सस्पेंडेड टाइप की ड्रग्स होती हैं जैसे सीरप्स होते हैं, वो एक्चुअली सस्पेंशन होते हैं, मतलब उनको क्या है टैबलेट में कन्वर्ट नहीं कर सकते, तो इसीलिए उसको सस्पेंशन बोला जाता है. तो ये वो होते हैं सस्पेंशन टाइप की ड्रग्स होते हैं, तो ये मेनली दिए जाते हैं प्रोटेक्ट करने के लिए, रियर के लिए. ओके, नेक्स्ट देखते हैं तुम्हारा एंटी हेलिकोबैक्टर पाइलोरी ड्रग्स. ठीक है, इसमें तुम्हारे कुछ एंटीबायोटिक्स आते हैं. तो पहला एंटीबायोटिक्स तुम्हारी क्लास में आपको पढ़ाई होगी मैक्रोलाइड्स. तो ये मैक्रोलाइड्स के अंदर आती है पहली एमॉक्सिलिन, दूसरी क्लाइजोमाइसिन, अब ये तुम्हारी है मेटेनाजोल, फेनिनाजोल एंड टेट्रासाइक्लिन एंड सीबीएस ईटीसी. नेक्स्ट देखते हैं. थैंक यू, ये आज के लिए इतना काफी था. तो
आज मैंने क्या है इसमें सब आपको ये बताया कि अल्सर क्या होते हैं, अल्सर कैसे होते हैं, अल्सर क्यों होते हैं, ठीक है, ताकि आप ये समझ सकें कि एक्चुअली हमको अल्सर हुआ तो अल्सर होने का एक्चुअल रीजन क्या था, क्यों अल्सर हुआ, ठीक है, उसके पीछे क्या दिक्कत थी। अब हम क्या है, अब जब इस वीडियो को देख लेंगे तो उसके बारे में समझ जाएंगे एक्चुअली अल्सर जो है इस तरह से हुआ है, ठीक है, इसका रीजन ये था हमें इस तरह से। अच्छा, मैं अब नेक्स्ट जो है इसकी डाइट के ऊपर वीडियो बनाऊंगा, तो आप कमेंट करें अगर आपको डाइट के ऊपर वीडियो चाहिए या नहीं चाहिए, ठीक है। ये जो कंटेंट जो मैंने लिया है, ये एक मैंने स्टैंडर्ड बुक मतलब केडी त्रिपाठी से लिया है। केडी त्रिपाठी एक पीजी एंड यूजी फार्मेसी एंड एमबीबीएस बहुत की स्टैंडर्ड बुक है, उससे लिया है, आप इसको फेक ना समझें। इट इज ए प्रॉपर एंड एफिशिएंट कंटेंट फॉर स्टडी एज वेल एज अवेयरनेस। थैंक यू, मस्ट वॉच एंड कमेंट प्लीज।